So today I'm going to start with our questions, and poll will be highlighted to you so that you can answer that question in a poll. Okay, so here is my first question. Try to solve this question. And here is a poll. Whenever you get the answer, fill in the poll. Okay. First question. Closer. Now by which we can correlate this property. बहुत अच्छे हैं बच्चे, बड़े easy questions हैं, and I think you can easily do that. Okay, चलिए. Closer. Now, which thing we can say is closer? तो आप बच्चे देख सकते हैं with R, we call it closer. तो A का R के साथ combination हो गया. Okay. Next आइए. Next we move to commutative. तो commutative means Q. तो B is related to Q. This is commutative. Next, associative. तो C is related to S. And last, identity under addition, D is equal to P. So we can simply say A with R, D with P. चेक कीजिए, A with R, सॉरी B with Q, ये हो गया, A with R हो गया, and B with क्या हो गया, Q हो गया, C with S हो गया, and D with क्या हो गया, P. So we can simply say its answer is A. And check it. How many student has done this question in a right sense? Got it? Have you seen the answer? Yes, sir. चलिए आगे मूव करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं बीच बीच में गैप के साथ करवाऊंगा बच्चे. एंड हियर इज वेरी गुड क्वेश्चन. सेम मैच द कॉलम. साथ साथ में पोल चल रहा है, तो यू कैन आंसर इट इन अ पोल. देखिए, एक तो आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, A is related to Q, B is related to R, and C is related to S. And at the last, what I can say, D is related to P. Now, if you check it, this thing is happened only in option A. So this is the way we can solve our question. Okay. And very good. 64% candidate got it right. चलिए, ये तो अभी बिगनिंग है बच्चे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने. ठीक. And here is your question.
Very good question for all of you. Read this statement and try to give the answer of question number 6. What is going on? He said, Satpal walks 2 by 3 kilometers from his home towards east. देखिए 2 by 3 kilometers towards east. ठीक. And then from there, देखिए अगर हम इसको कन्वर्ट करें 12 by 7 towards, देखिए यहां पे खड़ा हो वेस्ट. ठीक. तो इट बिकम्स 12 by 7. यहां पे खड़े होकर उसकी पोजीशन देखिएगा वेस्ट. एंड ही सेड एंड रीचेज हिज स्कूल. तो अपने स्कूल में वो यहां पे पहुंच गया. नाउ वी वांट टू टेल व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम. हाँ जी, कैन एनीबॉडी टेल मी हम कौन सा फार्मूला यूटिलाइज करेंगे? एनीवन? क्या पूछ रहा है? यस सर, पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras theorem. we will use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Very good. So we will utilize Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem say square of first यानी 144 upon 49 plus 4 upon 9. अब हम इसको क्या करेंगे बच्चे? सॉल्व करेंगे. तो अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 22 upon 21. तो दिस इज योर ऑप्शन. ट्राई करके देखना. ओके हाँ, कैलकुलेट कर सकता हूं मैं बच्चे. नॉट इन द सब्ट्रैक्शन फॉर्म, वी विल. ठीक. अच्छा एक चीज देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. यू कैन जस्ट आंसर मी. आई एम ओपनिंग ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 12. हाँ जी, एनीबडी? What is the answer of this question? Co-prime. No, they are not co-prime. Sir, twin prime. Twin Yes. We call Twin them primes. Twin twin primes. primes. बच्चे प्राइम co-prime तो कोई भी हो सकते हैं. सपोज कीजिए आपके पास 4 and 7 है. 4 and 7 है. They are also called co-prime. You can check it. इसमें 4 तो co-prime नंबर नहीं है, बट 4 and 7 के बीच में nothing is common, so we call them co-prime. ठीक. But these are called twin prime. अच्छा, पहला twin prime 5 और 7 होता है. और कौन कौन सा होता है बच्चे twin prime? Sir, 7 and 9. 7 है. 7 and 9. 9 and 11. 11 and 13. 11 and 11. 11 and 13. Which one? 11 and 13. 11 and हाँ, 7 and 9 is 1, not a 1 prime and 1, number. 3. 9 is not a prime number. 11 and 13. 17 and 19. 17, 19. 17 and 19. Very good. So they are called twin primes. Okay.
चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13। अभी ये पोल आएगा आपके पास, फिल इन द पोल। The number which is neither prime nor composite. वो कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, तो व्हाट इज दैट नंबर? बच्चे इसका आंसर होता है 0, सॉरी नॉट 0, इसका आंसर क्या होता है 1, विच इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Question number 15. Greater than or lesser than, and we will check them out. Which of the following statement is true? ध्यान से देखिए, गलती कर रहे हैं आप। देखिए, as I check the first one, देखिए, तो for first one every number is negative. Okay, that's good. अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? If you want to solve this question, तो आपके पास एक बेस्ट फॉर्मेशन होती है। If you want to check it whether they are 3, 9, 12 and 80 divided by 3, 1, 3, 4, 6. This is called the way to find out LCM. Okay, 3 into 3, 9, 9 into 8, 72. Okay, now what we can say in this particular questions. तो अब बच्चे हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 24 डिवाइड बाय 24। नेक्स्ट को मल्टीप्लाइड विद 8 डिवाइड विद 8, -5 मल्टीप्लाइड विद 6 डिवाइड विद 6, 7 by 8 multiplied by 4 divided by 4. So what you can say, it becomes -48 upon 72, -32 upon 72, -30 upon 72, and last term बचे क्या थी, -28 upon 72. तो this is the true relation. चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम पहले वाले पे ही हमने स्ट्राइक किया एंड वी फाउंड द आंसर। हाँ, when you move to the next one, so you will find out some one lagging in our formations.
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो ए होगा। तुक्का मत लगाइए, ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए आप, आई थिंक यू विल टेल मी दिस वन। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है एवरीबॉडी। Sir, 17 C. Associative. 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 yes, Associative. Associative. it is called associative। हम इस प्रॉपर्टी को किसके नाम से जानते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। नाउ कम ऑन टू दिस वन, you will know what is the meaning of this question। 21, हाँ जी, anybody? Yes, Shaktiधर। Say there is recurring on the 23 and Sir, 22. option A 0.45 0.45. 0.45. bracket. Okay, check कीजिए how we will solve it। देखिए, in this particular questions we will start from 0.23 23 23 23 23। इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड वर्मिकुलम। एंड नेक्स्ट क्या होगा? 0.22 22 22 22 22 and carry on। Now if we will add it, so we got 4 5 4 5 4 5 4 5 and 4 5, and ultimately I can write this one as, so your option A is true। इसको वैसे बच्चे बार बोलते हैं। जैसे आपके पास ऐसा आ जाए ना 7.6666666 लिखना है, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज दिस। इसका मतलब 6 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और जो रिपीट हो रहा है इसके ऊपर हम बार बोल देते हैं, बट एक्चुअल द नेम ऑफ दिस बार इज वर्मिकुलम। दैट इज द मैथमेटिकल नेम ऑफ दिस फॉर्मेशन। ओके, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल, दीज आर द क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम योर सिलेबस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 पे। एनीवन? Sir, like decimal fraction. Unlike decimals. Sir, like. Sir, unlike decimal. unlike decimals. Sir, like decimal fractions. Unlike decimal. सर उनके डिनोमिनेटर में 100 ही आएगा। Sir, like. Like decimal. Like. ओके बच्चे, these fractions are called like decimal fractions। सुनिए, when we write a fraction, okay, तो try to find my point, what I want to say। the first part of that fraction, जिस fraction की आप क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक? the first part of that fraction is called characteristic and the second part is called mantissa। okay, first part is called characteristic, यानी यहाँ पे characteristic क्या है? 16 and mantissa क्या है? 37। तो you will see 2-digit characteristic, 2-digit mantissa, 2-digit characteristic, 2-digit mantissa। तो we can simply say they are like fractions। ठीक, come on to next one। हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36।
Okay, so we can simply say, please check it. ये हमने क्वेश्चन किया था बच्चे. It's a very, very simple question for all of you. When we find out the percentage, ठीक, तो we can say, and it is 75%. Got it? किसी को डाउट बचे कोई? चलिए आगे चलते हैं. And here is very interesting question. Instead of this asterisk, you will find the digits so that this relation will be satisfied. Very good. I am giving you the poll to answer it. Question बड़ा simple सा है बच्चे. Very good. देखिए, what we can put in this question to simplify the formation. Okay, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरीकों से ट्राई किया है बच्चे, and we will try to solve for this question. अब देखिए क्या हो रहा है. He said divide. देखो एक आपके पास क्वेश्चन है. Whenever you try to find this type of questions, here is value 19 and here is value 5, यानी complete. तो हम क्या करेंगे बच्चे, just we can do कि हम 19 को पहले 5 से क्या करके देखें, डिवाइड. ठीक, तो when you divide 19 with 5, so you will get 3 as a quotient. ठीक, 3 क्या होगा, quotient होगा. तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस कि यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, बिकॉज फिर ही ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह की बनेगी. तो ये आपके पास 3 होगी. नाउ वी वांट टू चेक दैट कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या बनेंगे, इसको कंप्लीट करो. 3 into 1/2, when you check it, it becomes 7/2. तो अब बच्चे आप 19 को 7/2 से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई इट विद 2, तो इट बिकम्स 38. 38 को 7 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए. तो व्हेन यू डिवाइड इट विद दिस यू विल गेट 5, 35 and 3. तो आई कैन से 5 3/7. तो here is next value is 7. तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज 7, नेक्स्ट इज 3.
This is my question. And check your responses. Okay. Here is, I'm sharing the result. Yes, Sapna. Yes, sir. What is your option? Sir, C. Okay. From where you are joining? Sir, from Goa. Goa. Chaliye. Goa Panji. Sir, in Mauritius. Which one? Sir, in Mauritius. Okay. And how is the weather right now? So now it is sunset. Okay. Sun set. Yes, sir. And whether it is hot or cold? Now it is hot and cold, but mostly cold. Okay. Chaliye. So come on to next one. Let us start with question number 44. And when I have done the chapter playing with numbers, तो मैंने बताया था आपको how we will check that this particular number is divisible by 11 or not. शायद आपको याद हो. Dhruvansh, welcome. Yes. Unmute yourself, बच्चे. I cannot hear you. Just unmute yourself. Yes. I'm not able to hear you, but anyhow, let us start with this question. Which of the following number is divisible by 11? Anji, can anybody tell me how we will check it? Anyone? Okay, Arjun, how we will check it? Sir, we'll take the alternative digits and add them. That is, we'll group all the odd numbers and even numbers and add them. Then we'll find the difference of odd number and even number. If the difference is divisible by 11, then the whole number is divisible by 11. Yes. तो देखो, first of all, एक चीज आपने बड़ी सिंपल सी थी. 3 is not divisible by 11. इसको आप छोड़ सकते हैं. This is not divisible because 8 आप इसको छोड़ सकते हैं. तो we will just check these numbers. 9, 0, 1 and 3, 5, 1. तो हमने इनको चेक करना है बच्चे. तो sum of the odd places minus sum of the even places. ठीक. तो we will check that this one. बच्चे ये ना एक्चुअली क्या है, ये ना मैं थोड़ा सा आपको गलत गाइड करके, ये पूरा कंप्लीट नंबर है. ये 3 नंबर नहीं है, इट्स अ कंप्लीट नंबर. मतलब ये पूरा कंप्लीट एक ही नंबर है, ये पूरा कंप्लीट एक ही नंबर है. तो व्हेन यू गो टू दिस वन, तो यू विल सी दैट. अभी देखिए, ऑड प्लेसेस 9 + 1 + 11 5, तो इट बिकम्स 15. नाउ 0 + 3 + 1, it becomes 4. So 15 - 4, it is 11, divisible by 11. So B is the number. And similarly, we can check the other one also. Okay, option B is the right one. Got my point? Very good. Come on to next part. इसी तरह के एक और क्वेश्चंस में आ रहे हैं बच्चे.
here is a very simple question for all of you. Question number 54. And here is your poll. What we can take? We can take 1 by 4 whole square as common. What is left? 1 minus 1 by 4 into 2 power 6. Okay, so it becomes 1 by 16 into 3 by 4 into 2 by 6, 64. 6 into 4 into 64. This is 3. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या है, वैल्यूज है which we are going to solve. Got my point? So this is the way we can solve it. And आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया. That's great. हाँ जी, come on to this one. Very unique and very good question for all of you. And I think everyone can answer it. Very good. I'm getting your answer. I will tell you how you will solve it. Okay, very good. Its answer is C. Now how we will find it out? आप सभी ने 1 बता दिया बच्चे. No. देखिए, if I suppose this value as x, so now from here this is again equal to x. So this is the way we can solve it. Now what we can do, squaring both sides, and it becomes a quadratic, जिसको अभी आप सॉल्व करेंगे या हम आपको सिखाएंगे. ओके, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज, देखिए वैल्यू सिंपल सी, देखिए मोर देन 1, तो इट्स वैल्यू इज लाइज बिटवीन 1 and 2. कभी भी 1 नहीं होती बच्चे, इट विल लाई बिटवीन 1 and 2. कम ऑन टू नेक्स्ट वन. अब हम इसी तरह से कुछ और वैल्यूज पे जाएंगे बच्चे. तो सी माय क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर इज
this one. आपको इसकी वैल्यू सॉल्व कर, how we will solve this question. Okay, I can start from the lower end. ठीक, and from lower end I will solve it, and it becomes, okay, 4 minus 5 upon 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 2 plus 1 upon 4. Now when you solve it, it becomes 9 by 4. तो आप इसको छोड़ दीजिए, it becomes 9 by 4, or ultimately we can say it is 4 upon 9. Now just solve it, this one. So you will find it becomes 9 LCM, 27 plus 4, it becomes 31 by 9. Now when you put 31 by 9 instead of this place, it becomes 31 by 9, means to say 9 ऊपर चला जाए. Now solve it, it becomes 41 upon 31. Now I, instead of this, write 41 upon 31. 31 means upper wala part. Okay, now solve it, you will get 41. 41 into 4, 164. नहीं बच्चे, ये 40 अपॉन था, सॉरी ये 40 अपॉन था, ठीक, 40 upon 31, ठीक, तो it becomes 40, and here it becomes 150, ये हो जाएगा 160 and 155, it becomes 5 by 40, and ultimately you will get your answer as 1 by 8. I don't know how many have you have done it, but we can solve the question in this sense. Yes, बच्चे. सर सर जब 41 से वहां पे मल्टीप्लाई किए थे तो 160 कैसे आया? 40 फिर अपॉन में कैसे लिखा गया? कैसे कैसे सर जब यहाँ पे 40 से 144 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 160 आया, तो 40 यहाँ पे क्यों फिर से लिखेंगे? नहीं बच्चे, आप देखिए कि आपके पास क्वेश्चन क्या था, 4 minus 155 upon 40 था. Now I can take the LCM. तो LCM is 4, 40, तो 44 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा. ओके सर. तो I can simply write it as 50 upon this one, which is equal to 1 by 8. That is the way we can solve it. ओके सर. Okay, तो ओके. ये हमारे पास एक क्वेश्चन का क्या था, आंसर था. तो एक और क्वेश्चंस पे हम आते हैं, जस्ट चेक इट. Today we are doing some simple algebraical formations, जो हमारे पास बिल्कुल क्या है, सिंपल से सिंपल फॉर्मेशन को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती है. ओके, एंड हियर आई एम गोइंग विद द क्वेश्चन. देखिए 71, आई थिंक ये आप सारे सॉल्व कर दो. इन विच
figure does the shaded portion represent 0.3? A, B, C, D. What is your option? I will show you again. Which portion represent 0.3? Yes, anybody can answer it. Sir, A. A, very good. A. Sir, देखिए, option A. it is representing 1/4. It is also representing 1/4. But if you see, here we have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and this one. तो यहाँ पे आपके पास किसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है बच्चे? ए पोर्शन में किसकी रिप्रेजेंटेशन बन रही है? 3/10. तो we can say 0.3. तो option A is the correct option. And this is the assignment of our today's part. And बच्चे आपको इसमें से अब we have total, if you see that, so in this assignment you will get total 75 questions. Okay, so this will be available on your app in as assignment. Do it there and fill the answer. And that's all for the day.